Operationalizing the curriculum development process for a classroom, stage 3. What we look in this third step is that we are assessing the teaching and learning process we have done in the classroom. Since this is our last lecture and we are trying to look for what we can do inside a classroom if we are teachers and we have given the role of curriculum developers. If a curriculum document is given to you, then you can strengthen the curriculum after learning this process of curriculum development. If you are initiating the process of curriculum development on your own, that it can give you a very good way to just begin the process and see how well you can do it on your own while you are teaching yourself at any grade level up to elementary level. In the assessment in the third stage, what we are looking at is that our performance is assessed of the students, that formatively or summatively, how well they are performing on the test. Then we generate a student's data, who is doing what, who is doing up to the mark, who is not performing satisfactorily, who is performing extraordinarily in our classroom, and which are the areas where students they need some help. So it depends upon the way of assessment you are using in your classroom. Once we are doing all these assessment strategies, then we try to put a value to the performance of the students and we define their level of achievement. Either they are failing a course or they are passing a course. Or we say that students, they are performing up to a certain percentage level. Someone has gone up to 90% of performance or 50% of performance. So this is up to the way you put a weightage to students' performance and you put a value. Or in other words, you evaluate the students. So assessment is being done in separately: summative, formative assessment, classroom participation, group participation. So you have all these assessments. Once you have all these assessments, you put them together and then you put a value to the performance of the students. You say someone did very well inside the classroom and someone did very bad in the classroom. Someone needs help in these areas. So we are completing our third step in this framework of teaching and learning and framework of curriculum development for a classroom, and for the purpose of evaluation of the students and evaluation of the instructional objectives. Once we are through with this process, what are we going to look for? करना क्यों चाहते हैं? आप being teachers क्या देखना चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों ने कंटेंट में क्या सीखा जो आपने उनके लिए पहले स्टेप में प्लान किया था और आपने दूसरे स्टेप में उसको एग्जैक्टली उसी तरह से टीच किया जैसे आप करना चाहते थे. सो यू हैव टॉट देम सर्टेन कंटेंट. हम फिर देखना चाहते हैं किस किस्म के स्किल्स बच्चों ने सीखे, और बिहेवियर्स आर समथिंग विच कैन बी असेस्ड आफ्टर सम टाइम, एंड दिस बिहेवियरल चेंज दे डोंट टेक प्लेस ओवरनाइट. सो हम सिर्फ कंटेंट और स्किल को देख सकते हैं. Whether they can explain something, they can describe something, they can demonstrate, they can make a presentation. So these are the skills, or they can make an analysis of any problem, they can solve the problem. These are all the skills which you can assess on day-to-day basis or on weekly basis or monthly basis. But behavioral change, it takes place over some time. So once we are assessing, the purpose of assessment for a teacher is to know that how well the content they had prepared and the skills they had decided to be taught in a classroom, how well students they are performing against all those content areas and the skills which were decided to be taught. If students they don't perform up to the mark and they are showing limited performance, what we do is we go back and we revise and we look into the curriculum development process, where we either modify the lesson or modify the plan, the curriculum plan जो हमने इनके लिए प्रिपेयर किया था पहले स्टेप में. हम ये देखते हैं बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो हम अपनी प्लानिंग को चेक करते हैं. वी चेक कि हमने करिकुलम का क्या प्लान डेवलप किया था. वी हैव टू मॉडिफाई, वी हैव टू चेंज द प्लान. एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि वी हैव टू रीटीच दैट. हो सकता है कि हमारी प्लानिंग में उतनी गलतियां ना हो या कुछ कमी ना रह गई हो. It could be in the way of teaching or in the strategies or the activities we were using in the classroom. So हम रीटीचिंग करते हैं और मुख्तलिफ strategies के ज़रिए, मुख्तलिफ activities के ज़रिए using different kind of resources हम उसी लेसन को पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसको हमने modify कर दिया होता है. So in this process
वी आर काइंड ऑफ गोइंग बैक टू प्लानिंग अगेन। अगर आप टोटल प्रोसेस को देखना चाहें एक ही स्क्रीन पर, where we operationalize these steps in curriculum development, जिनको हमने अलग अलग भी देखा। हमने 3 स्टेप्स को कहा कि ये एक फ्रेमवर्क देता है टीचर्स को क्लासरूम की टीचिंग की प्लानिंग के लिए। और अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर देखें, जब हम ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं एक क्लासरूम में टीचिंग के लिए करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस को, तो हम देखते हैं कि पहले स्टेप में हम प्लानिंग फॉर टीचिंग एंड लर्निंग करते हैं एंड वी मूव टू स्टेप 2 where we implement the plan। जो आपने करिकुलम प्लान डेवलप किया था आप उसको पढ़ाते हैं। थर्ड स्टेप में यू असेस टीचिंग लर्निंग, और आपके पास 2 जगह आ जाती हैं। यू लुक फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु हैव नॉट मास्टर्ड समथिंग, दोज हु हैवंट लर्नड और हैव शोन लिमिटेड परफॉर्मेंस या अचीवमेंट बहुत अच्छी नहीं है, तो हम अपने मॉडिफाई कर लेते हैं यूनिट को या लेसन जो आपने प्लान किया होता है। बेसिकली आप जानते हैं कि करिकुलम प्लान या ये यूनिट प्लान की फॉर्म में हो सकता है या आइसोलेटेड इंडिविजुअल लेसन्स भी हो सकते हैं। सो व्हाट यू डू इफ आवर स्टूडेंट्स दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, you go and you modify the plan and you then reteach in the classroom. If you look at the students, those who are showing mastery and those who are performing well, what you do is you prepare and you move to the next unit and next lesson and you start planning for or curriculum planning for new lessons and for new topics, and you go back to the step 1 where you are planning new lessons. So it's kind of a cyclical process. We can see that all these 3 processes and 3 steps, they are very closely linked. And after the assessment हमें पता चलेगा कि हमें आगे बढ़ना है या हमें उसी लेसन को दोबारा से मॉडिफाई करके या बेहतर करके पढ़ाना है। So this is the whole process of curriculum development. Either you are teaching 1 grade level or you are teaching at primary level any subject area, or you are teaching 1 lesson in the classroom while you are developing curriculum for teaching in the classroom. This is the way and this is the process we follow. अगर आप इसको देखें तमाम प्रोसेस को, तो आपको पता चलेगा कि आप रोज़मर्रा के अपने लेसन जो प्लान करते हैं तो यही तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। One thing we have to keep in mind that teacher is getting or curriculum developer is getting all the support from the resource material which we have explored during the course, and we have used Tyler as one of the model, जहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरह से हम purposes of education को identify कर सकते हैं। We can define the objectives, we can identify the learning experiences, we can organize the learning experiences, and then we can evaluate कि किस हद तक हमारे learning experiences को achieve कर लिया गया है। The process of curriculum development, no matter which level we are doing, either it's at a primary or elementary level, it's for a school, small school or a big school, for any subject area, 1 unit in that subject area, it can be for 1 classroom, जैसे कि अभी हमने तफसीलन देखा कि किस तरह से आप मुख्तलिफ स्टेप्स में जब अपनी प्लानिंग ऑफ टीचिंग करते हैं, यू इम्प्लीमेंट दैट टीचिंग प्लान एंड देन यू असेस द टीचिंग प्लान एंड यू plan or replan, or you go for new planning depending upon the performance of the students. So you are following all those steps which are involved in the process of curriculum development, even if it is done at a larger scale. Or being curriculum developers and teachers, you are into this exercise almost every day, and you are doing this all over again and again. So you can be very good curriculum developers if you want to develop curriculum for any subject or any school. तमाम की तमाम रिसोर्सेज या एनर्जी जो टीचर्स हासिल करते हैं या रिसोर्सेज टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम वही रिसोर्सेज हैं जो हमने इस कोर्स में तफसीलन देखी, और ये उम्मीद की जाती है कि इस कोर्स के बाद और इन तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आप बखूबी किसी भी सब्जेक्ट का करिकुलम प्रिपेयर कर सकते हैं।